So hello everyone, welcome to our channel Medico Prime Education. So this is very important video for you if you are in the first year and you have selected your dream medical college. So for that you have congratulations from my sides that you are going to start to become a new doctor. Okay, so all the best for your journey. So first we will start the first year basics, that the how you should tackle the first year things, that like there are many things in the first year like books, notes, how to tackle with the books, how to read the books, and how to tackle many things you will see in your college. Apart of that, I will share the most of the um, clinical things that you have to follow in the first year that will be help in the final year team. So will be our the last part. First we will discuss the what you have to do in the first year mbbs. So I will discuss the basic plan you have to follow whole year. Okay, so let's be with me. So first of all, we will discuss the academics. In academics you have to study the books. Basically you have to study the books. So in the academics, the books, you have three subjects. For three subjects you have many different books you can see here. So for the anatomy, physiology and biochemistry, there are three main subjects in the first year. You have to read truly about these subjects. You have to study from starting. There is a no idea, there is a no trick, there is a no shortcut for passing the exam. You have to study in the first year. But the first year is most enjoyable. A part of that you have to study as long as. Okay, so we will discuss how to study these subjects, but first you have to first you must know about the books you have to follow in the first year. So for the anatomy you have to follow the BDC, or you may follow the Visram Singh. The Visram Singh textbook is very easy, and BDC is also very easy, but the diagram of the Visram Singh is very easy. So you can easily understood the parts of the whatever you will study in the anatomy. Okay, so like if this you are studying the stomach, or you are any studying the any nerves related to any part, that is nerves of the upper limb, the very basic, there is a basic diagram in the books that you may follow the for that nerves. So this is very understanding part. So you can easily understand from this diagram. So diagrammatic representation, diagrammatic representation is very good for that book, so we should follow. A part of that, the content you have to write in the exam is also given in this book, so this is very important. I should You should follow the Visram Singh for your anatomy, what I suggest. Okay, so BTC is a standard book you should follow, but a part of that Visram Singh is also best. Okay, so let's move to the फिजियोलॉजी सेम्बुलिंगम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एन भी आप फॉलो कर सकते हैं. Apart of that, you must have to follow the Guyton and Halls. Guyton and Halls is very standard book and follow most of the Indian students. Apart of that, foreign students also follow the Guyton. So Guyton is a very textbook, very important textbook you should follow, and you should learn for your knowledge, not for your writing in your exam. Just for writing your exam, writing for your exam, the Sambulingam is very best book. Okay, so you should follow. A part of that, the very easiest language is given in the Sambulingam, and you can also follow the GKPAL, because GKPAL is the like a diagrams are very good in the GKPAL, and contents are also in the systematic points. Okay, so this is very good. And you have to follow the biochemistry. What I suggest that DM Vasudevan is very best book, very best book in the first year. Satyanarayan is not a standard book. Okay, so you should follow, many student follows, but not I did not suggest any book for Satyanarayan. Okay, so Satyanarayan is not best book. I suggest DM Vasudevan. What are the important features of DM Vasudevan? First, it is very clinical. Many clinical correlations you will find. It is very important to understand the clinical correlation for understanding the biochemistry. You may learn many things by the time, or by the prof, or by the year in the MBBS for anatomy and physiology, but biochemistry you have to remember from the first year itself, because the clinical practice for biochemistry is very important, so that you can learn the everything. You can learn most of the things of the biochemistry from the clinical scenario or clinical questions. So it is very important. So I suggest to follow the DM Vasudevan. Okay, so how to study these books?
Basically no one can read all the topics and no one can learn the all topics of this book. Basically we have to remain we have to follow only the important things. Okay, so first you should know the important chapters, important topics for your exam. Okay, whether it is the NEET-PG, whether it is your um, university exam. So it is very important to understand this point first. Okay, so for the theory exam, read the textbook. Okay, first you have to read the textbook line by line and try to understand them and try to relate your concept from the previous topics. Okay, try to relate your from the previous knowledge and try to understand this and try to learn this thing at least जितना हो सके उतना याद करने का ट्राई करो, कॉन्सेप्ट को समझो, तो ये बुक्स जब तुम पढ़ रहे हो तो आसान हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। A part of that during the reading your books, make your own notes. This is very basic, you have to follow this these things in the first year itself. Okay, so make a habit of make a habit of to do make your own notes. Okay, a part of that you have to follow the practice diagrams in your exam. Okay, so for your exam the diagram is very important, very important, so you can get the good marks in your exam. Okay, so अब क्या है ना कि तुम नोट्स तो बना रहे हो, तो नोट्स में वही टॉपिक तुम लिखो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं लास्ट में एक चीज क्लियर करूंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एग्जाम एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पीजी। देयर इज अ वेरी डिफरेंस, देयर इज अ वेरी डिफरेंस इन दैट। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो योर प्रॉफ एग्जाम, क्योंकि तुम्हें पहले तो प्रॉफ एग्जाम ही पास करना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उसी में फेल होते हैं, तो उस केस में तुम्हें बस प्रॉफ एग्जाम अच्छे से पास करना है एंड कंटेंट क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारा वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। जैसे यू 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 कैन फॉलो माय एमबीबीएस वीडियो इन द आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इन दिस वीडियो आई टोटली मैंने उसमें पूरे तरीके से अच्छे से समराइज करके बताया किस तरीके से आपको एग्जाम में एनाटॉमी के लिए किस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। अपार्ट ऑफ दैट ये कंटेंट कहाँ मिलेगा, क्या लिखना है, किस तरीके से हमें वीडियो को फॉलो करना है, आई विल बी शेयर in the upcoming video, because this is very important to know that there are many free contents available in the YouTube itself. I also uploaded many videos of anatomy in the content in a sequential way. Okay, so you can go and learn. Apart of that, if you have so much money, then you can waste on the marrow prep etc. Okay, so you can do all these things. So first of all we have to study the textbook, because textbook is the best way to learn everything, and a part of that you will make the notes from the textbook, whatever the important topic you may got, and you have to make notes on that topic always. Okay, so make a notes in that point that you must have to remember during the writing in your exam. Okay, so this is very important. Okay, so you have to decide the important topics, and after that you have to write these topics in your notes and make your notes your own. Okay, so this is very important for your passing the first year exam. A part of that, for gaining the knowledge, you have to read your textbook also. Okay, so first textbook did not make the sense, because you have to read superficially, okay, and make the deep concept in that superficial lines. Okay, so this is very important for you. Okay, first read and make notes, and after that second read revision notes and make exam related revisions. Okay, so you have to make the revisions from that notes, and you will be passed from that prof itself. Okay, so there is a very difference between the first prof syllabus and NEET-PG syllabus. Some are contraindicated and some may be the same, syllabus may be the same. What do you mean by the syllabus? Syllabus means that many important topics is very important for PG but not important for the prof exam. So you have to follow, first of all you have to follow the important topics for first prof. There is a no burden to complete the NEET-PG syllabus for the anatomy, physiology or biochemistry respectively. There is a no need to follow this syllabus. You will when you will complete your MBBS journey, then for your during the preparation of your NEET-PG, you will complete these subjects within the 20 days. Okay,
So you will complete this subject within 20 days. So don't mind for their NEET PG syllabus. Okay, for that subject. So you have to must you must have to follow the prop syllabus. Okay, so this is very important that क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि डाइवर्स हो जाते हैं कि भाई मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है, अब तो आ गया हूँ, अब नीट यूजी हो गया, अब नीट का प्रिपरेशन करना है, लैब निकालना है, यूएसएमडी निकालना, बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन इसमें मत पढ़ो फर्स्ट ईयर अच्छे से, क्योंकि ये एक बेसिक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर एक बेसिक है क्योंकि आपको ये सारे चीज काम आएंगे कहाँ पे, जब आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक जाओगे तो ये चीज सारा चीज ये चीज काम आएगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करो और आगे उसमें प्रोसेस करो किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तो इट्स गुड। ओके, सो नेक्स्ट, अब next point is the for video lectures. For video lectures, what you have to follow: for anatomy there are many free contents. For video lecture there are many free contents which are available in the YouTube itself. Okay, so if you have too much money, then you can go to the subscriptions of the Mero Prep PW, you can go. Okay, and this is also for concept building also. I am not going to say that this is very bad videos, this is very, no, this is very good and conceptual. But if you don't have money, if you have shortage of money, if you're very not good financial condition, then you can follow the YouTube video also, always. Okay, so my video is also available. I teach the whole anatomy, with the notes. Okay, so this is that there is a Telegram channel in the link, you can join, and you can download the all the notes of the anatomy. ओके, सो बेसिकली जो मैंने उसे पढ़ाया वो हिंदी में ही पढ़ाया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके ही पढ़ाया है, तो सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ओके, सो and you can take the subscription if you are very eager to take subscription that like a PW mein how it look like. It's because you came from the PW and LN, you may watch, you may have watched the videos of that faculties in the PW and LN. देयर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो यू आर वेरी इच्छुक होते हैं ना कि भाई कैसा होता होगा फर्स्ट ईयर में, ये सब सब्जेक्ट किससे पढ़ाते होंगे, तो इसके लिए लेना है तो मत लो भाई, पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस अपलोड है, आप वहां से में यहाँ तक आप प्रैक्टिकल के लिए भी वहां पर मैं बताऊंगा कौन कौन से यूट्यूब लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। ओके, so for the practical content, first free on the YouTube. I always suggest to go to YouTube and search that topics and you will get the best video. Okay, so bones demonstration you have to learn in the anatomy, and organ demonstration, and there is a dissection part in the anatomy. These are all the your college. Okay, these are all depends on your college. ओके, सो कॉलेज में किस तरीके से आपको ये सब सारा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, आप किस तरीके से सीखते हैं, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। डाइसेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में आप डाइसेक्शन नहीं सीखे तो भाई आपको फाइनल ईयर तक आपको डाइसेक्शन करने का समय नहीं मिलेगा, मतलब मौका ही नहीं मिलता, समय छोड़ो, ठीक है। So there are many YouTube videos like Sam Webster videos, Dr. Virendra Khadia videos. So you can go through that their playlist. They easily understand. They easily taught the easy way. They taught these topics in the easy way. That each bone has demonstrated whatever written in the VDC. They demonstrated in the bone. Okay, they actual in the actual bone. So you have to read that point also. Okay, so there are many things. A part of that देयर आर बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री वन टाइम प्रैक्टिकल है, वो चीज आपको रट के ही जाना है, याद करके ही जाना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारा प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और सारे कॉलेज में बताते हैं। तो ट्राई करो, फोकस करो, जब बताते हैं, जब कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं, उस समय यू हैव टू फोकस at least one time, you will be better in that practical and you will get the good score in the university exam. Okay, so dissection के बारे में बात कर लेते हैं। Please don't skip the dissection part because dissection is very fundamental things in your first year. Okay, so everyone is interesting and most of the students are interesting in the dissection. Okay, so you have to make the basically you have to make the all these subjects interesting so that you can easily learn. Okay, so for proper instructions during the dissection, follow the proper instructions like discipline way में आपको dissection करना चाहिए, ठीक है। There is no fun for making the dissecting body with dissecting body. This is very irrelevant things. Okay, so please don't do this in your dissection hall. You have to respect that body because that body is your first teacher of your anatomy, okay, or first teacher of your MBBS life. So you have to respect that body also. Okay, so
try to get learn and gather the information whatever written in the books, whatever the things written in the book, try to get things and try to get learn from these body to the um, by connecting these body and your books. Okay, so this is very important for you. So be the active dissection, be the part of active dissection, and don't be worried during the dissection, because many students become separate and get some, ठीक है, माथा हिल जाता है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. दिस इज द सिंपली अ बॉडी, ठीक है. और यू कैन से ही और सी बेसिकली अ टीचर, जो कि अपना बॉडी डोनेट किया है, कुछ अच्छे काम किए होंगे ताकि वो अपना बॉडी डोनेट कर सके बॉडी को बच्चों के पढ़ाई के लिए, ठीक है. तो एक तरीके से ही और सी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, एंड वेरी वेरी बोल सकते हैं महान, ठीक है, बहुत ज्यादा महान है कि वो अपना बॉडी डोनेट किया. तो सो बी रेस्पेक्टेबल ड्यूरिंग द डाइसेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज आवर द हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट पार्ट इज हिस्टोलॉजी. सो बेसिकली इन हिस्टोलॉजी यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्लाइड्स एंड राइट आउट द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स. Basically you have these two things you have to written in your exam, and you have to follow these slides. Okay, you have to learn all these slides. The very basic thing is this slides is very important for your first prop itself, but second prop itself, and in the medicine it is very important. Okay, so identifying slides is very important, because you can be you will be able to understand the histopathology behind that organ by identifying these slides. So this is very important in your second prop itself. Okay, now let's move to the hematology. Hematology में क्या है कि clinical physiology, experimental physiology, and sorry, and in physiology practical there are three things: hematology, clinical physiology, and experimental. There is a lifetime study. You have to study these three things. Okay, so अच्छे से नॉलेज, अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके आप इस चीजों को पढ़ो, ताकि आपको ना अगले आने वाले एमबीबीएस प्रॉप में आपको आसानी रहे, क्योंकि ये तीनों चीज है ना, जो क्लिनिकल फिजियोलॉजी और हिमेटोलॉजी, ये आपका बेसिक्स है, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी थोड़ा सा कम है, लेकिन क्लिनिकल फिजियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, दिस विल बी बेटर. यू हैव टू स्टडी इन द बेटर वे इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब आप ये सीख जाते हो तो फाइनल ईयर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है. आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होगी, एंड ये चीज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ फर्स्ट ईयर में इस तरीके से करना होता है. देखो, फर्स्ट ईयर इंजॉयबल है, लाइफ में इंजॉय करो, ठीक है. फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, इंजॉय करो. इंजॉय के साथ साथ आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई भी करो कॉलेज में, ठीक है. पार्टीज करो, ठीक है, सब चीज चलता है, लेकिन ये चीज अगर आप नहीं करते हो तो आपका एमबीबीएस में आना व्यर्थ है, ठीक है. देयर इज अ नो सेंस टू कम इन द एमबीबीएस फॉर बिकमिंग द डॉक्टर if you didn't these things in the first year. Okay, if you will not do so, this is very important for your career, because these are very important for your career, because these all come in the practical skills when you will go to the clinical postings in the second year or third year or fourth year. So this is very basic thing you have to follow in the clinical practice. Okay, so you have to follow. Now next most is the ragging part. So in the medical college there is a very historic things, that is ragging comes from the history, and history always repeats. Okay, so रैगिंग के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा. रैगिंग इज लाइक अ इंट्रो, ठीक है, इंट्रो तक ही होना चाहिए. बेसिकली इट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. पहले इसको एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता था, अब इसको रैगिंग बोलते हैं. अब इसमें क्या था कि बेसिकली बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू व्हाट हाउ टू रिस्पेक्ट टू द योर सीनियर्स. आप अपने सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है. इसमें इस तरीके से सारा डिसिप्लिन वे में सिखाया जाता है, अपने जूनियर्स को सिखाते हैं अपने सीनियर्स, ठीक है, ताकि वो चीज जब फील्ड में उतरे तो जो पीजीज हैं, जो इंटर्न्स है, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स है, ठीक है, जो प्रोफेसर्स है, जो एचओडी, उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, किस तरीके से विश करना है, ठीक है. एंड इंट्रोडक्शन लेते हैं बहुत सारे सीनियर्स, जिसमें कि उसमें अपना नाम कहाँ से हो, टू गेट इंट्रो अबाउट ईच ऑफ देम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अब जो चीज इट्स गुड, बट कुछ ज्यादा अच्छाई से भी ज्यादा ऊपर हो जाता है, ठीक है, कुछ चीज पर्सनल हो जाता है, तो उस केस में रैगिंग खराब होती है. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू रैगिंग, अगर आपको रैगिंग नहीं देना, जस्ट इन्फॉर्म देम टू द सीनियर्स दैट आई विल बी नॉट इन, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, ओके, सो अपार्ट ऑफ दैट आपको भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपको जबरदस्ती ये सब सारी चीजें करनी पड़ रही है, तो यू कैन इन्फॉर्म योर रेस्पेक्टिव कॉलेज, ओके, मैनेजमेंट, दे मे बी टेक द एक्शन. ओके, सो नाउ मैं ज्यादा कुछ भी बोलूंगा नहीं. फाइनेंस, ठीक है, मनी. अब देखो, ये चीज तो सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट
सबको पता है बुक्स इज वेरी कॉस्टली, बहुत सारे बुक्स तो सीनियर से लेके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बुक्स कॉस्टली होती है, बट you have to follow these books. Okay, so try to make your own notes, because don't waste your money for buying the so many notes. It's good to take योर ओन नोट्स। ओके, मेक योर ओन नोट्स, एंजॉयमेंट करो, ठीक है, पार्टीज करो, ट्रिप्स बनाओ। फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब करना, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फिर ये सब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलता है ज्यादा टाइम, ठीक है। द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नीट पीजी प्रिपरेशन। ओके, सो नीट पीजी प्रिपरेशन करना किस तरीके से, कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट आई सजेस्ट कि आप ना ये चीजों को थर्ड ईयर से स्टार्ट करो, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगता है फाइनल ईयर का और थर्ड ईयर का, उसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होकर उसको आगे आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल चीज को ज्यादा एक्वायर करने का सेकेंड ईयर में ट्राई करो। थर्ड ईयर में आप ट्राई करो कि आप नीट पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो टोटली एकदम, क्योंकि थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उसके बाद आपको 2 से 3 से 4 सब्जेक्ट होता है जो कि छोटे छोटे होते हैं, 2 सब्जेक्ट मेजर होता है, ठीक है। तो उस केस में आप नीट पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड प्रॉप और फर्स्ट प्रॉप इज ओनली फॉर द क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है। आप क्लिनिकली जितना अच्छे से डेवलप करोगे, थ्योरी को अच्छे से करोगे, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ने का आदत डालोगे, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा आपको क्लिनिकली और उसके बाद जब आप नीट पीजी का प्रिपरेशन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन लेके बैठ जाते हैं इतने महंगे महंगे, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। You have to study from the basics, from the textbook, what I have told you in the earlier in this video. So this is very important for you. Okay, I hope you understood well in these things. Okay, so whatever I have discussed, what I feel in my career, what I feel in during my first and second prof, I have shared to you, and many more things will be come in my channel, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आई होप यू लाइक द वीडियो, and please don't forget to subscribe my channels. Apart of that, many contents related to the MBBS first prof, second prof, I will be uploading in this channel, so you have to be be a specific for your स्टडी। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें ज्यादा ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।